अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हम खत्म करने लगे हैं आज चैप्टर 18 व्हिच इज एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट्स एंड इन्वेंटर्स। आज हम जो थोड़े बहुत साइंटिस्ट रह गए थे डिस्कस करने के लिए, आज हम उनको डिस्कस करेंगे एंड विल एंड दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। Moving on in the list of the scientists, the first one we have is Sir Frank Whittle. Sir Frank Whittle was born in 1907, 1907 में इनकी पैदाइश हुई, and 1996, 1996 में इनकी वफात हुई। Now Sir Frank Whittle was a British aeronautical engineer by profession. Aeronautical engineer, those engineers which work with the creation, designing of the aircrafts. Now he has the credit of inventing the jet engine on his credit. 1926 में 1926 में he joined the Royal Air Force. Royal Air Force join करने के बाद when he flew the aircraft, he was more fascinated by the technique of jet propulsion rather than the jet propellers itself. मतलब जिस टेक्निक से jet moves, ये उस टेक्निक में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय इसके कि जेट इंजन जो है वो मूव किस तरह कर रहा है। Now, then what he done was that he experimented and he was given the credit, the team, the space to work with his idea. And in 1941, first experimental aircraft fitted with jet engine made it test flight. पहला experimental jet engine या aircraft जिसमें jet engine fit हुआ था, उसकी test flight 1941 में हुई। Right now what you're seeing on your screen is a cross section of a jet engine. एक jet engine का cross section जिसमें आपको fans, fuel, ignition. ये jet engine was advantageous and better than the earlier engines. और वो advantages क्या थे? Let's take a look at them. Now, जिन फवाइद की बात मैं कर रही थी वो ये थे कि jet engine के invention की वजह से it was faster than the earlier engines or the earlier aircrafts. ये उससे तेज था, simpler, it was in its design easier to make, fewer moving parts, बहुत कम moving parts थे which meant less resistance, and the best part was कि diesel was the fuel which was used in jet engine, because इससे पहले petrol was being used और petrol एक expensive fuel है and diesel is a cheaper form. So jet engine की जो invention है, it led on to the jet engines and the technological advancement of the jet engines later on, but the invention and the credit of the invention goes to Sir Franklin. Moving on, we'll talk about a Pakistani scientist. He is Dr. Abdul Salam and he was born in 1926. 1926 में उनकी पैदाइश हुई। In 1996, 1996 में उनकी वफात हुई। He is credited for being the Nobel Peace Prize winner in branch of a science called physics in 1979. 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था फिजिक्स की ब्रांच में, which is a branch of science, फिजिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल थियरी पे काम करने की वजह से। और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी because it led to the opening of a new era of particle theory. Now, Dr. Abdul Salam was a brilliant student from the very start. His matriculation, he stood first and topped the Punjab University. फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की। Then he went on to do the masters in mathematics and physics. फिर उन्होंने PhD की डिग्री ली फिजिक्स में from the Cambridge University in 1948 and 1949. 1948 और 1949 में उन्होंने कैम्ब्रिज से PhD की डिग्री हासिल की। And then he went on to work for the Imperial College, UK, which was a part of Cambridge University, and Punjab University in Pakistan. और ये दोनों इंस्टीट्यूट्स एजुकेशनल जो हैं इनमें इन्होंने टीच किया फ्रॉम 1951 टू 1957। इंपीरियल कॉलेज यूके का और पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की। 51 to 57 he was a part of these two institutes. Then he became the member of Atomic Energy Commission, a commission which is still in place and is associated with the research in the atomic department. Then he founded SPARCO. SPARCO was Space and Upper Atmosphere Research Commission in 1961. 1961 में Dr. Abdul Salam में, I repeat, SPARCO found किया, which was Space and Upper Atmosphere Research Commission. I should write it as well. Space
and Upper Atmosphere Research Commission. Then he went on to found International Center for Theoretical Physics in Italy और ये इन्होंने 1964 में 1964 में कायम किया. इसका नाम later on change करके डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रख दिया गया था. He is associated with gaining 32 doctorates degree from 23 universities around the world. He was a very learned man and his contributions hold a high place in the field of physics. He also motivated many of the Pakistani students and Pakistani scientists to pursue their careers in the same field and achieve their doctorate degrees. Next, I'm going to talk about Sir Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming was born in 1881, 1881 में इनकी पैदाइश हुई, and died in 1955, 1955 में इनकी वफात हुई. अब he was a Scottish doctor और इनके क्रेडिट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है and that discovery is penicillin. Penicillin is an antibiotic जिसको आज के दौर में हम सबसे कॉमन एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं. But when he discovered this antibiotic, it was a great breakthrough. Why? Because he was experimenting in his lab and he was growing molds in a petri dish. एक शीशे की डिश के अंदर ये molds grow कर रहे थे. Accidentally he left the dish open and the window was nearby and the air was blowing. After some time he actually covered the petri dish again. After some time he saw that there was a new sort of mold. एक नई तरह का मोल्ड उस पेट्री डिश में ग्रो कर रहा था और इस मोल्ड के ग्रो करने की वजह से जितनी बाकी ग्रोथ हुई हुई थी वो सारी खत्म हो गई थी. Which actually meant कि एक एंटीबायोटिक is responsible for killing all other germs, all other sort of microorganisms in a human body. Later on इसको पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से जाना गया. So this was the name which was associated with the microorganism जिससे penicillin जो है वो ली जाती है. Now what happened was he struggled for few years and left the research in 1930s. Sir Alexander Fleming जो थे इन्होंने अपनी research continue रखी and he wanted to produce a large amount of penicillin ताकि उसको use करके human body में diseases या infections treat किए जाएं. 1930 के around उन्होंने अपनी रिसर्च बंद कर दी because he was not able to grow a sufficient large quantity of that microorganism. But later on, Howard Florey and Ernest Chain, ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे. इन्होंने ये ग्रोथ और ये एक्सपेरिमेंटेशन दोबारा स्टार्ट की. जब इन्होंने स्टार्ट की तो दे वर एबल टू अचीव द ब्रेक थ्रू. पेनिसिलिन वाज प्रोड्यूस्ड. उस जमाने में वर्ल्ड वॉर 2 हैज स्टार्टेड. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने लोग थे जो बीमार थे उनको ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक बहुत काम आई. सो इट वाज अ वर्थ वाइल एंड इट सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स देन एज वेल एंड लेटर ऑन एज वेल. सो इस वजह से इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया इन 1945. 1945 में इन तीनों को विच इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन, इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया. नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट कॉच, 1843 to 1910. 1843 में इनकी पैदाइश हुई एंड 1910 में इनकी वफात. आई बिलीव ही वॉज वन ऑफ दोज साइंटिस्ट जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है. यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट. एक जर्मन साइंटिस्ट थे हु वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जर्म टेक्नोलॉजी. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जर्म विच इज बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी. ही actually discovered and identified the microorganisms as bacteria. Let's take a look कि जब इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया तो contributions कितनी की इन्होंने और उनको इतना important क्यों माना जाता है. Now, he was the first one who isolated germs behind TB. Tuberculosis के जो germs थे वो इन्होंने isolate किए. And the spit test जो कि आज भी यूज होता है TB को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये इन्होंने डिस्कवर किया, ये फॉर्मुलेट किया, जिसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन सलाइवा से टीबी के जर्म्स आइसोलेट किए जा सकते थे और पता लग सकता था कि इंसान को टीबी है या नहीं. एंड देन ही वाज द वन हु फाउंड द क्योर. मूविंग ऑन, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया. इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी डेंजरस डिजीज इन एनिमल्स. उसका भी ट्रीटमेंट इन्होंने ही फाइंड किया.
which saved millions of lives, and to find the cure of TB, that was in itself a huge thing. Then he went on and he moved to India. When he moved to India, तब इंडिया में कॉलरा फैल रहा था. And he was the one जिन्होंने कॉलरा के germs isolate किए, isolate करने का मतलब अलग किए, और इस बात को find out किया कि गंदा पानी पीने से कॉलरा फैलता है. So that is why in 1905, 1905 में इनको Nobel Peace Prize दिया गया for his worthwhile contributions for saving the mankind. Moving on, we have Christian Neethling Bernard. Christian Neethling Bernard, he was born in 1922, 1922 में पैदा हुए और 2001 में इनकी डेथ हुई. He was a South African surgeon. South African surgeon थे, and इनके साथ क्या चीज associated है? He was the first surgeon to carry out the first successful heart transplant. जो पहला successful heart transplant था कि एक इंसान का हार्ट लेके दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, वो इन्होंने किया था. 1967 में 1967 में he successfully transplanted a heart of a dead person into a woman who lived for 18 days. इन्होंने successfully एक मरे हुए आदमी का हार्ट एक औरत में ट्रांसप्लांट किया और वो औरत 18 दिन तक जिंदा रही. Later on मजीद काम किया गया, सर्जरी की फील्ड में भी काम हुआ. फिर he was able to transplant a heart into another person, and that person was able to successfully live for 563 days. Later on, advancement came, technology came, surgery field improved. Heart के साथ साथ lung, kidney, liver इनके transplants भी start हो गए. Bypass surgery, then you talk about cabbage. So, he gave way to a new branch of surgery. Then, I should talk about Dr. Salim Zaman Siddiqui. He was born in 1897, 1897 में पैदा हुए, and he died in 1994, 1994 में इनकी डेथ हुई. इन्होंने 1927 में जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री ली. उस डिग्री के बाद he came to Pakistan and he is actually the pioneer of scientific research in Pakistan. इन्होंने PCSIR के नाम से एक रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में स्टार्ट किया और उसके साथ साथ इन्होंने एक साइंटिफिक जर्नल भी स्टार्ट किया जो कि आज तक प्रिंट होता है. इनके नाम से एटलीस्ट 150 साइंटिफिक रिसर्चेस एसोसिएटेड है और 50 पेटेंट्स एसोसिएटेड हैं. ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, ही वॉज वेरी वर्सेटाइल, ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड ही वॉज एन आर्टिस्ट एज वेल, जिनका काम फ्रांस, इटली और पाकिस्तान में डिस्प्ले किया जाता था. इन्होंने 1990 तक PCSIR को अपनी सर्विसेज दी. He gave pathway to other people who wanted to continue research and wanted to contribute to the scientific research as well. So here we end the chapter of explorer, scientists and inventors. We have discussed all those inventors, scientists and explorers who have made a worthwhile contribution towards the mankind or towards the world map. अब next lecture में हम discuss करेंगे इसके questions. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.